Hey everyone, good afternoon. Good afternoon, Sahil. Alright, welcome to the second lecture on sequence and series. Today we're going to look at geometric progression, harmonic progression, and AGP. Just the intro of it, some more questions on those concepts. We will do it in our special classes. Alright. My name is Amit Surana. I am an aeronautical engineer from Chennai with over 7 years of experience, and I have trained over 2.5 lakh students so far. Please don't forget to join this Telegram group. The link for the group is also there in the description. Click on the link to become a part of it. Chalo. So let's start talking about sequence and series. So far we have already seen arithmetic progression. We've seen AP in the previous class. Today we are going to start with GP, then move on to HP and then AGP. Alright. Hello Vineet. Welcome. So let's talk about geometric progression. The concept behind geometric progression is pretty direct. Okay. Just like how in arithmetic progression, yes, in arithmetic progression, So in arithmetic progression, how we add the same term to the previous term, in geometric progression, you just multiply. That's it. Yes, that's the simple idea behind it. For example, if I take say 2, then if I multiply this with a number, let's say the next term is 6, the next term is 18, the next term is 54. Can you tell me what will be the next term, guys? Can you tell me what will be the fifth term of this geometric progression quickly? Hello Prachi, hi Gaurav, good afternoon Shreyashi. Hello Gaurav, good afternoon buddy. 162, superb Gaurav, very good. Yes, so what's going on here? See, the same number is being multiplied. So if I multiply 2 with a number, I should get 6. Yes, what is that number? That's called the common ratio R. Common ratio R is always given by the next term by the previous term. So 6 by 2, which is what? 3. So 3 is being multiplied everywhere. 6 into 3, 18. 18 into 3, 54. So what will be our next term? 54 into 3, which is 162. Yes, correct. Yes, Gaurav. 162, common ratio R is called, R is called the common ratio. Yes. So what do we understand? If we want the second term, if we are looking for second term, 6 can be written as first term into the common ratio 3. Yes. Second term can be written as 18 can be written as first term into the common ratio multiplied 2 times. Correct? Common ratio को 2 बार multiply करेंगे into 3. The next term 54, the fourth term, can be given as the first term into the common ratio multiplied with itself 3 times. Yes, 3 to the power 3 and so on. So our fourth term 162, our fourth term can be given as fifth term can be given as what? First term multiplied by the common ratio how many times? 4 times. Yes, which is basically 4 times is 81. 81 into 2 is 162. Yes, this is how you find the nth term of a geometric progression. Yes, so to be able to find the nth term of a geometric progression, what would you require? So if I say first term is A, second term would be A into R, third term would be A into R, which is A times R square, A times R cube, and so on. So our n minus 1th term will be how much? A into R to the power n minus 2, correct? This is 2, this power is 1. This is 3, this power is 2. This is 4, this power is 3. So what will happen? N minus 1 minus 1, which is A into R to the power n minus 2, and the nth term will be A into R to the power n minus 1, right? Is that clear, everyone? Yes, so nth term can easily be found
in any given geometric progression. Now this R that we are talking about, right, this common ratio R that we are talking about could be positive, could be negative, could be greater than 1 or less than 1. Yes, common ratio. So if the given series, if the given series is increasing, if the series is increasing, like the example we took है ना, 3, 6, 18, 54, 162, उसमें क्या हो रहा है, R was 3 है ना, सॉरी R क्या था अपना, ये क्या हो रहा है, R क्या था, 3 था, मतलब R was greater than 1. So if R is greater than 1, then the series will increase. What if let me give you an example of a series that decreases. Okay, let's take 12, 6, 3, 1.5, 0.75. what is happening here? यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सीक्वेंस जो है, टर्म्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, करेक्ट, हाफ, फिर दोबारा से हाफ, फिर 3 का हाफ, फिर 1.5 का हाफ, हाफ 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 होते जा रहा है. तो यहां पे क्या है, the R is less than 1. So if R is less than 1, then the sequence will decrease. समझ गए? What if आपका सीक्वेंस ऐसे होता, देखो ध्यान दो यहाँ पे, let's say if your sequence was like this, okay, 2, -4, 8, -16, 32, -64. Is this geometric progression increasing or decreasing, guys? ये increase हो रहा है कि decrease हो रहा है, जल्दी से बोलो. This particular sequence, is it increasing or decreasing? Anyone? No, Sahil. Either which ways, if you look at the term and the next term, पता चल जाना चाहिए, है ना. तो यहां से यहां 2 से -4 डिक्रीज हो रहा है, बट -4 से 8 इंक्रीज हो रहा है. यस, सो दिस इज नॉट अ कंसिस्टेंट जीपी, बट इसका कॉमन रेशियो आप इजीली निकाल सकते हो. कैसे? -4/2, इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, -4/2, which is -2. Yes, so if R is negative, 8 by -4, -2, -16/8, -2, समझ रहे हो? Yes, if R is negative, then what happens? It is inconsistent. Increase भी होता है, decrease भी होता है, both. Inconsistent. Okay? Amazon का मालिक, आओ भाई, आप ही का इंतजार था. बता दो बिग बिलियन में कुछ ऐसा है कि ले लें, कि वही बस सेम करते हो आप. Alright, done guys, understood. So if R is greater than 1, the series is increasing. If R is less than 1, the series is decreasing. If the series doesn't increase or decrease consistently, that basically means the R would be a negative term. Okay, chalo. So we understood how to find out the nth term of a geometric progression. Sum of n terms of a geometric progression can be found out by what? Multiplying the first term, yes, into common ratio R raised to the power n. N is the position, number of terms, -1 divided by R minus 1. Yes, this will work when R is greater than 1. If R is less than 1, if your R is less than 1, that is decreasing में, decreasing GP में क्या हो जाएगा, 1 minus R, 1 minus, so whatever it is, you will take 1 minus, that's it. तो इसका एक simplified version आप ऐसे ले सकते हो, sum of n terms is equal to a modulus R power n minus 1, so not modulus per se, but हाँ ठीक है, modulus ले सकते हो, divided by modulus of R minus 1. समझ गए?
Yes, या फिर if you don't want to confuse yourself with a modulus, what you can do is instead of the subtract sign, just take whatever is the positive difference. ठीक है ना, जो भी positive difference है वो. Clear? Yes, and if there are infinite terms to a sequence, this is very important, this will be useful in a lot of places. Infinite terms का मतलब क्या है? जैसे if I start with let's say 8, 4, 2, 1, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, this will keep going on. ये कभी एंड होगा क्या? ये वाला सीरीज कभी भी एंड होगा क्या गाइस? Will this series ever end? ये वाला जो सीरीज है 8, 4, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125, ये कभी भी एंड होगा नहीं, ये जाते जाएगा, राइट? दिस विल कीप गोइंग ऑन, दिस विल कीप गोइंग ऑन टिल 1 by 1024, 1 by 2048, ये जाते रहेगा, राइट? दिस विल कीप गोइंग ऑन 1 by 4096, राइट? दिस विल नेवर एंड. Yes, so this will keep going on till what? Infinity. Yes, so if there is a sequence and this will work only for decreasing GP, okay? ये सिर्फ decreasing GP में ही काम करेगा, क्योंकि increasing GP में फिर आप fathom नहीं कर पाओगे उसे. Decreasing GP में you can at least get the sum. So sum of infinite terms is given as A by 1 minus R. ठीक है, अब जैसे इसका सम ढूंढना है मेरे को, let's say if I want to find out the sum from 8 till infinity, क्या हो जाएगा इसका सम? इन्फिनाइट टर्म्स है, मतलब क्या? a by 1 minus r, क्या है यहाँ पे? 1 by 2 है ना, 1 minus 1 by 2. So the sum of infinite terms here will be 8 by 1 by 2, which is 16. Yes, so what we can do is we can start adding. देखो 12, 14, 15, 15.5, 15.75, 15.88, right? ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा. This will keep going on till you get 16. समझ गए everyone? Yes, so sum of terms, sum of infinite terms, that's it. Okay, and if you take the ratio of two consecutive terms, या any two terms of a GP, if you take the ratio of any two terms of a GP, you will get r to the power difference between them. Yes, for example यही वाला ले लो, take this particular GP itself. अगर मैं let's say first term which is 8 and third term which is 2, इसका अगर मैं रेशियो लूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 by 8 is nothing but 1 by 4, correct? Which is nothing but 1 by 2 the whole square. That is nothing but 1 by 2 to the power 3 minus 1. ये 3 minus 1 कहाँ से आया? ये रहा 3 minus 1. Understood? A to the power r square by a to the power r, or the other way around if you want to go with a by ar square. First term by third term ratio. जैसे अपन AP में, in AP we used to subtract, correct? In AP the difference between two terms we used to take. In GP we take the ratio of it. That's it. ठीक है? Done everyone? है ना? चलो, we'll try out some questions. Let's try this out. Let's try out the first question here.
Alright, Ruchika says D, insufficient data. Makes sense, है ना? सिर्फ मिडिल, सिर्फ A4 दे दिया, फोर्थ टर्म दे दिया, बाकी और कुछ दिया नहीं है, कैसे ढूंढेंगे प्रोडक्ट, है कि नहीं? प्राची says D, very good. Divyang also says D. Ruchika नहीं. Happy realization, Ruchika. D is not right. Trap. ये क्यों trap है? Why is this trap? Because this is too obvious. है ना? This is too obvious यार. ठीक है. देख के पता चल रहा है, बट ये बिना ट्राई किए आंसर कर रहे जैसे. Right? Too obvious. Yeah. So चलो देखो यहाँ पे, देखो मैं समझाता हूँ. So out of the 7 terms, A4 is 5. This term is given as 5. Yes. Can I write A5? A5 can be written as A4 into the common ratio, which is 5 into R. Will you agree? फोर्थ टर्म से अगर मैं कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को फिफ्थ टर्म मिलेगा. सेम वे फिफ्थ टर्म से R या फोर्थ टर्म से 2R स्क्वायर, है ना? सो दिस इज 5 टाइम्स R स्क्वायर, दिस इज 5 टाइम्स R क्यूब. ऑल्टरनेटिवली यहां पे देखो A3, है ना? A4 कैन बी गिवन एज A3 इंटू R. मतलब A3 क्या होगा? A4 डिवाइडेड बाई R, है कि नहीं गाइस? A3 क्या होगा? A4 डिवाइडेड बाई R, मतलब 5 बाई R. यहां पे क्या हो जाएगा? फर्दर डिवाइडेड बाई R, मतलब 5 बाई R डिवाइडेड बाई R इज 5 बाई R स्क्वायर. दिस इज 5 बाई R क्यूब. What are we supposed to do here? We are supposed to multiply them. So if I multiply these terms, product of 7 terms of this particular GP is going to be what? R cube cancel, R square cancel, R cancel. Ultimately what are we left with? 5 multiplied by itself 7 times. Got it guys? Yes. If you guys have any doubts, please ask. No, so what is 5 power 7? 5 power 7 is 5 power 4 into 5 cube. 5 power 4 is 25 square, which is 625 into 125. 625 into 125 is how much? 78,125. So this was one of those questions जहाँ पे देखने पे ट्रैप पता चल रहा है, but people are still falling for it. ठीक है? Done. 5 power 7 is the right answer. 78,125. That's how it happens, है ना? ऐसे ही होता है साहिल, हर क्वेश्चन में ऐसे ही होता है कि without properly looking at all possible ways, guys, always remember, without confirming everything possible, do not select none of the above, cannot be determined, insufficient data. Also those kind of answer choices जहाँ पे बोले both A and B, ऐसे वाले जब आते हैं answer choices, right? You have to be careful. Without proper confirmation, please don't select these. ठीक है? Just like in this example. चलो next question. Quickly try this.
ट्राई करिए। दिस इज मोर कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है ये। दिस इज नॉट वन ऑफ दोज क्या बोलते हैं जल्दबाजी में करे जैसे, वो वाला नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, आराम से आंसर आएगा इसका। ओके all right, answers. Sahil is saying B, 38. Shreyashi is saying 722. Others? Sahil and Shreyashi have answered. बाकी लोग? तो पहले देखते हैं क्या बोल रहे हैं लोग। They're saying in a geometric progression A1 से लेके A12 का sum is equal to A14 से लेके A1 का sum. That basically means what? A1 plus A2 all the way till A12 is equal to उल्टा A1 से A14 का सम है ना, दैट इज A1 प्लस A2 ऑल द वे टिल A12 प्लस A13 प्लस A14। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल दीज टर्म्स आर गेटिंग कैंसल्ड आउट, राइट, सबट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से, सारे टर्म कैंसिल हो रहे हैं। अल्टीमेटली व्हाट आर वी गेटिंग, दैट A13 प्लस A14 इज इक्वल टू 0। A13 or A14 is equal to 0. One of the explanations to that could be what, that A13 is equal to minus of A14 है ना? Yes. Further what are they saying, if the arithmetic mean of the first 19 terms is 38, if the arithmetic mean of first 19 terms is 38, what does this mean, कि अगर मैं स्टार्टिंग से लेके A1 से लेके all the way till A19 ऐड करके, if I add them up divided by what, 19 terms, right, this is supposed to be 38. Yeah, getting it? So what does this mean guys, कि अगर सम ऑफ A1 से लेके A19 तक, A1 से लेके A19 तक का सम पे डिवाइड बाय 19 करने पे 38 आ रहा है, यस, सो कैन आई से A1 से लेके A19 तक का सम इज सपोज टू बी इक्वल टू व्हाट, 38 इंटू 19, 38 इंटू 20 इज 760, 760 से 38 निकाला 722। So sum of A1 से लेके A19 क्या है, 722। If A13 is equal to minus A14, common ratio R क्या हो जाएगा, -1। Yes or no guys? Common ratio R क्या हो गया, -1। Say yes if you agree with this. हाँ बोलो जल्दी अगर आया समझ में ये। Yeah, now they're asking what is A3, what is A3। तो यहाँ पे क्या क्लियर हो गया, what is clear here, अगर A1 तो यहाँ पे sum of 19 terms, sum of 19 terms, can I say A1 is equal to minus of A2, A1 क्या होगा, minus of A2 होगा, A3 क्या होगा, minus of A4 होगा। Will you agree with this?
यस, ऐसे करके A17 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ A18, करेक्ट। मतलब A1 से लेके all the way from A1 all the way till A18 का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डू यू अग्री विद दिस? A1 से लेके A18 तक का सम क्या है, 0। क्यों? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एग्रीड? समझ रहे हो? प्लस माइनस एंड सो ऑन। तो व्हाट वी कैन डू हियर इज, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं if first term is A, then second term is minus A. If third term is A, fourth term is minus A, so on. Yes, तो ये पूरा 0 हो गया. This is supposed to be 722. What does it mean? That A19 is 722. Can we find out A3 from there? Yes. A19 by A3 is nothing but r to the power 19 minus 3, r to the power 16. Yes, A19 हमें पता है 722 है, divided by A3 should be equal to r is minus 1 whole power 16. So what are you getting? 722 by A3 is equal to positive 1, or the third term of the sequence is 722. Say yes if this is clear, guys. So people who said 722, Uday, Shreyashi, very good. Sahil, just a small hiccup, you assumed all the terms to be 38. You assumed all the terms to be 38, but that's not true. Got it? Chalo guys, beautiful. Yeah, if you have any doubts you can ask. Otherwise what do we get? That the third term is 722. ठीक है? So these are all logic based questions. direct formula वाले नहीं है, थोड़ा सा logic based question है. One of the examples is this. Let's see if you can quickly try. Always remember, whenever you have dot 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 and it is not completed, if the number of terms is not mentioned, if the number of terms is not mentioned, then always consider it as infinite terms. Okay, always consider the series as what? Infinite terms. Yes, Sahil, yes, true. True. A1 till A19 by 19 will be equal to A1 plus A19 by 2. Correct. Arithmetic mean of 19 terms. If it is in AP though, Sahil, that applies only for arithmetic progression, not for geometric progression. वो वाला जो पार्ट है वो सिर्फ arithmetic progression के लिए, हर किसी सीरीज के लिए नहीं है, है ना? समझ गए? चलो ये वाला ट्राई करो जल्दी से. ओके, उदय सेज बी x by 5. सर घूमने लग गया. विनीत, बेसिक क्वेश्चंस है ये सारे विनीत, इसमें कुछ ज्यादा अपन एक्सट्रीम कर ही नहीं रहे. वी आर नॉट इवन टेकिंग अप एक्सट्रीम वाले क्वेश्चंस, बेसिक वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं. इसमें वो अननोन लगा के, इक्वेशंस लगा के, वैसे वाले क्वेश्चंस तो कर ही नहीं रहे. सो उदय एंड साहिल आर सेइंग बी. अदर्स? Okay, so this formula of sum of infinite terms, जो कि क्या है? फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर.
This works only and only if r is less than 1, है ना. ये सिर्फ तभी काम करेगा जब r is less than 1, डिक्रीजिंग जीपी जब हो. तो एक बार चेक करते हैं r का वैल्यू. लेट्स चेक r का वैल्यू. r इज व्हाट, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, है ना, which is minus 2x by 9 divided by x by 3. तो इसको नीचे वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई कर लेंगे. 2x by 9 into 3 by x. So x और x cancel, 3 once, 9 3 times. This is what, minus 2 by 3. Got it? So this is not, it's not just r should be less than 1 का नहीं सीन है, तब तो कोई भी नेगेटिव टर्म हो जाएगा. The modulus of r should be less than 1. मतलब modulus of r जो कि क्या हो जाएगा in this case, modulus of minus 2 by 3. Is this less than 1? Yes it is. ठीक है. तो अब अपन वो डायरेक्ट सम का फॉर्मूला लगा के सीन खत्म कर सकते हैं. सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स हियर इज गोइंग टू बी a by 1 minus r. a क्या है, x by 3, 1 minus r. yes, यहाँ पे minus r itself is minus 2 by 3. so 1 minus of minus is plus 2 by 3, which gives me what, gives us what, x by 3 divided by 1 plus 2 by 3 is 5 by 3. So by 3 cancel, we get x by 5. Okay, option B, x by 5 is our answer. Very good guys, beautiful. तो यहाँ पे common mistakes would be to consider r as 2 by 3. अगर मैं r को 2 by 3 लेता, not minus 2 by 3, और 2 by 3 क्या हो जाता, sum of infinite terms here would have become x by 3 by 1 minus 2 by 3, which is 1 by 3. This would have been equal to x, but this is wrong. ये गलत है. क्यों गलत है? Because r is not equal to 2 by 3, है ना. r is equal to minus 2 by 3. Also the answer for this would have become cannot be determined. इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कैनॉट बी डिटरमिन्ड होता अगर r का वैल्यू लेट्स से -2 होता. इफ r was -2 और -3 और -3 by 2, yes, तब आंसर क्या होता, कैनॉट बी डिटरमिन्ड. Why? Because then the GP will be increasing GP decreasing GP mix, है कि नहीं guys? r is equal to -2 पे GP increase भी होगा decrease भी होगा. So there is no sure way of finding out the sum. So sum of infinite terms would have been cannot be determined. Sum of n terms, अगर वो n का वैल्यू दे देते कि first 5 terms का ढूंढो, first 10 terms का ढूंढो, तो ढूंढ सकते थे. Understood? Go ahead. Let's try out the next question from geometric progression. ट्राई करिए ये वाला. Vineet, this is one of the important concepts. Sequence and series is one of the important concepts. इससे questions आते हैं, है ना. There have been situations जहाँ पे 2-3 question भी पूछे गए हैं. So I would not want you to skip this under any circumstance. Atharva says C. Don't skip. APGP sequence series is one of the concepts anyone would not ask you to skip. Please don't skip it. Payal says B, -13.5.
रुचिका says B, उदय says D. ठीक है, चलो let's start solving this. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि these are the first three terms of a GP, A1, A2, A3 अगर GP के first three terms हैं, so they are what? A, 2A plus 2 and 3A plus 3. हमें पता है कि common ratio R will be equal to what? A2 by A1, which will also be equal to what? A3 by A2, है ना? So if I use these two terms, if I take into consideration these two terms, can I say A2 the whole square, A2 into A2 cross multiply will be equal to A1 into A3? है कि नहीं? A2 square is nothing but A1 into A3. तो A2 square, which is 2A plus 2 the whole square, should be equal to A into 3A plus 3. Yes, so what do we end up getting here? 2A square, which is 4A square, plus 2 square, which is 4, plus 2 times AB, which is 2 into 4A, that is 8A, should be equal to 3A square plus 3A. Now you get a quadratic equation, bring everything to the left hand side. 4A square minus 3A square is A square. 8A minus 3A is plus 5A, and you have plus 4 equal to 0. Are you feeling this, guys? So from here can we find out A? यहाँ से can we find out A? Yes or no? A will be equal to what, guys? Product of the terms should be 4, sum should be 5. So 4 into 1, sum should be minus 5, so minus 4 into minus 5, right? Minus 4 into minus 1. Make sense? तो A के possible values क्या है? minus 1, or A could also be equal to minus 4. Say yes if you agree with this, guys. हाँ या ना, जल्दी से बोलो. यहां तक क्लियर है? Yeah. Now we need to find out the fourth term. Fourth term ढूंढने के लिए हमें क्या चाहिए? R का वैल्यू चाहिए ना. We need R का वैल्यू to find out the fourth term. Yes. So if A, let's take minus 1. Let's start with minus 1. ठीक है? If A is minus 1, then A2 क्या हो जाएगा? minus 2 plus 2 0, है ना? A2 क्या हो गया? 2 into minus 1 is minus 2, minus 2 plus 2 0. A3 क्या हो गया? 0. तो A4 क्या होगा? 0. Yes, but there is a problem here. यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. क्या देखो? R का वैल्यू is A3 by A2, है ना? R का वैल्यू क्या है? A3 by A2. तो R का वैल्यू हो जाएगा A3 which is 0 by 0. 0 by 0 कितना, guys? How much is 0 by 0? Is it possible? है ना? Not defined है ना? This value is not defined. ये कुछ भी हो सकता है. So it's contradicting. मतलब A equal to minus 1 is not the right value. Ultimately, what will we have to go for? A equal to minus 4. Yes. तो first term अपना क्या हो गया? minus 4. Second term क्या हो जाएगा? 2 into minus 4, which is minus 8. minus 8 plus 2, minus 6. Third term क्या हो गया? minus 12 plus 3, which is minus 9. So what should be A4, guys? क्या हो रहा है यहाँ पे? It is being multiplied by 3 by 2, correct? Into 3 by 2 into 3 by 2. तो यहाँ पे भी into 3 by 2 हो जाएगा. 9 into 3 27 by 2 minus में. What is minus 27 by 2, guys? Minus 13.5. Is this clear, everyone? So people who said option B, minus 13.5, beautiful. People who said C, minus 27, or none of the above, or even A, if you had thought of it, please check the solution. Okay? Is this cool, guys? Any doubts here, anyone?
So always remember, if GP, then you take the ratio. Consecutive ratio will always be equal. Yes, consecutive ratio will always be equal. Ratio of A2 to A1 should be equal to ratio of A3 to A2 should be equal to the ratio of A4 to A3 and so on. समझ गए? ओके ना? AP में अपन डिफरेंस लेते थे, यहाँ पे रेशियो ले रहे हैं बस. That's the only difference. Alright? चलो. Let's move on to the next question. This is one of those practical applications of GP. Practical applications of geometric progression. Try करो. Let's see how many of y'all can answer this. Vineet says B. Okay. Early answer. All right. समर्थ चलेगा समर्थ, आराम से करो, रश मत करना, ठीक है? कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, आराम से करना. जल्दी जल्दी जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि आप कुछ समझे नहीं और सिलेबस कवर करना है उस हिसाब से मत करना, ठीक है? आराम से देखना, बट वॉच इट थरोली. जल्दी भी देख रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, बट वॉच इट थरोली, ठीक है? चलो. Payal says D, none of the above. All right. Okay. अच्छा, मैं एक सेकेंड आया, ये बास्केटबॉल को हटा के आता हूँ. रुको एक सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड. आई विल बी बैक विद दिस बास्केटबॉल रिमूव. गाइस, आई एम बैक. हाँ ठीक है. वो बास्केटबॉल को हटा दिया, फालतू में कूदे जा रहा था वो. Alright, Uday and Payal are saying D. अच्छा, जिनका आंसर D है, please tell me what, how much. If your answer is D, tell me how much. Hi Vedahi, thank you so much Vedahi. Uday says 190. Okay, any other answers? 190 kilometers. Payal says 1.9 kilometers. Okay. Chalo. Alright, let's have a look at this. Okay. So a ball is dropped from 100 meters height. So we're going to consider, let's say there's a wall. Okay, ek diwar hai. There's a wall which is 100 meters. Yes, 100 meters. Now what I want you to know is the ball moves in 2 directions. Ball यहाँ पे 2 direction में चलती है. सबसे पहले first it goes down. Yes, that means first it falls, it travels 100 meters. Then when it bounces back, it reaches a mark 10% lower than the point of drop. That means 100 meters से 10% कम. That is how much? 90 meters. Yes, so it covers only 90 meters. है ना? Next one में क्या है? सिर्फ 90 meters. Then in the next case what happens again? When it drops, वो ball जब ऊपर से फेंका, नीचे हुआ, bounce हुआ, ऊपर से नीचे 100, नीचे से ऊपर 90, फिर जब वापस नीचे जाएगा, then it will again cover how much? 90. Am I right? यहाँ से ground तक 90 again. Then in the next case what will happen? In the next case, when it comes back, it will not cover full 90, it will only cover 81 meters. है ना? It will only cover 81 meters. Am I right guys? Say yes if you agree with this. है ना? Right, super.
सो फर्दर अगेन ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा 81 मीटर्स एंड सो ऑन. सो इफ यू वेर टू पुट दिस इन अ सिंगल जीपी, एक पूरा सिंगल जीपी में डालेंगे तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? पहले 100 ट्रैवल किया, फिर 90 और 90 180 ट्रैवल किया, या फिर ऐसे लिखते चलो 2 टाइम्स 90 प्लस 2 टाइम्स 81 प्लस 2 टाइम्स 72.9 एंड सो ऑन, है ना. ऐसे चलता रहेगा इंफिनिटी तक, जब तक वो रेस्ट पे ना आ जाए. रेस्ट मतलब क्या? इंफिनिटी तक. मेक सेंस एवरीवन? हाँ या ना? तो अगर इफ वी वेर टू फाइंड आउट द सम ऑफ दिस डायरेक्टली, इसका सम अगर मैं डायरेक्टली करता तो मैं क्या करूंगा यहां पे? व्हाट आई विल डू हियर इज लेट मी ऐड 100 एंड देन इसका सम क्या हो जाएगा? सम विल बिकम व्हाट? 100 200 180 162, दैट इज 90% है कि नहीं? यस और नो गाइस? 90% हो रहा है ना. 180 का 90%, 162 फिर 90%. सो इसमें कॉमन रेशियो R क्या हो गया? 0.9. यस. सो सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स इज A by 1 minus R, which is फर्स्ट टर्म अपना क्या है? 200 by 1 minus 0.9. yes, this is how much? 200 by 0.1, which is 2000 meters. But there's a slight problem here. अपन ने क्या किया? We added this extra 100. वो extra 100 नहीं ट्रैवल कर रहा है ना, नीचे से ऊपर 100 नहीं कर रहा है, ऊपर वो ऑलरेडी था. तो ये एक्स्ट्रा 100 को अपन निकाल देंगे. जो अपन ने एक्स्ट्रा 100 यहां पे ऐड किया था, वी आर रिमूविंग दैट. यस. सो व्हाट विल हैपन? 2000 माइनस 100 इज 1900 मीटर्स. 1900 मीटर्स कितना होता है? 1.9 kilometers. Okay, is this sorted guys? Is this clear everyone? रुचिका ऊपर नीचे बॉल बाउंस हो रहा ना, बॉल बाउंस हो रहा है राइट. रुचिका ऊपर था 100 मीटर्स पे, नीचे गया, वापस ऊपर आया, बट वापस ऊपर पूरा 90 नहीं आया. तो 100 से नीचे गया, 90 ऊपर आया. 90 वापस नीचे जाएगा ना, ग्रेविटी है कि नहीं? 90 मार्क पे है, 90 से नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर आएगा तब 81, फिर वापस नीचे 81, वापस ऊपर 72.9, वापस नीचे 72.9 एंड सो ऑन, है ना. Is this clear? Chalo. Okay, before we move on to the next question, a lot of ongoing and upcoming batches guys. This is my weekend batch. ये मैं हुआ. This is my weekend batch for CAT and OMET 2022 aspirants. I am taking time and work and time speed distance there. So if you are someone who's still preparing for it or have doubts with this, can join this weekend batch hai. There are other batches starting from the 6th of October. Yes, for 2022 people and for people who are preparing for 2021. Last mile to CAT and OMET, so there will be revision, there will be practice, all of that. So if you want to become a part of this, all you've got to do is take the subscription. Don't forget to use my code Surana Live for your discounts. Okay, विनीत, इसका यही मतलब है, इसका एक ही मतलब है कि आप प्रैक्टिस इनफ नहीं कर रहे हो. भले आप कर रहे हो प्रैक्टिस, मे बी यू आर डूइंग द प्रैक्टिस बट द प्रैक्टिस इज नॉट सफिशिएंट, है ना. तो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, प्रैक्टिस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, प्रैक्टिस यू नो जितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो वो भी थोड़ा सा इंक्रीज करो. Not perfect, Prachi, not perfect, but okay, accepted by society. जितना perfect, एकदम perfect नहीं, but ठीक है, accept कर सकते वैसे वाला.
ओहो साहिल, हैशटैग इक्वालिटी. Try this question. I'll explain this question. ठीक है, they are saying A, B and C are three numbers in geometric progression. A, B and C जो है geometric progression में है, इनका sum दे दिया है 70. Yes, A plus B plus C is equal to 70. Now what are they saying? If the extremes be multiplied by 4. यहाँ पे एक्सट्रीम क्या है? ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है. एक्सट्रीम को 4 से मल्टीप्लाई करो, गिविंग यू व्हाट? 4A 4C एंड द मीन कौन है? ये बीच का टर्म मीन होता है ना, ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5B. दिस इज इन AP, ये AP में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. ठीक है, हमें क्या ढूंढना है? B का वैल्यू ढूंढना है. हाउ मच इज B? Quickly try this. Let's see if you can. करिएगा ये वाला ट्राई. इफ नथिंग एल्स वर्क्स, रिवर्स इंजीनियरिंग जिंदाबाद. अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो रिवर्स इंजीनियरिंग करो, चेक करके देखो. ओके इक्वेशन तो है ही है, इक्वेशन तो डेफिनेटली है ही है, फिर भी आ रहा किसी को? एनीवन? उदय सेज नन ऑफ द अबव. 14/5 क्या? ठीक है, 2.8 बोल रहे हैं उदय. और कोई? उदय का आंसर है 14/5, 2/2.8. Okay, there are a lot of things that we can take into consideration. ठीक है, A, B and C. तो अगर B का टर्म B है, can I say C is nothing but B into R and A is nothing but B by R? They're saying the sum is 70 है ना, B by R plus B into R is 70. Does this make sense, guys? So this is one of the things that we can do. यहाँ पे if you want, you can go for trial and error. If you want, go for trial and error. This will help you a lot. Okay? या फिर अगर उस समय पे नहीं लग रहा है दिमाग सर, ट्रायल एंड एरर का नहीं लग रहा है दिमाग, then you'll have to go for equation solving, which is a very ugly thing to do. Okay? So another thing will be what? B को 5 से मल्टीप्लाई किया, which is 5 times B. यहां पे इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 4 टाइम्स. सो 4 टाइम्स B by R, और यहां पे इसको भी 4 टाइम्स B by R. ये AP में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. इसका क्या मतलब है? दैट B minus A, we know that in arithmetic progression B minus A should be equal to C minus B, है ना? In AP, in arithmetic progression B minus A और C minus B इक्वल होना चाहिए. मतलब B minus A
या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, b को यहाँ पे लेके आ जाओ, a को उधर लेके चले जाओ, 2 times b is equal to a plus c. So 2 times b, that is 2 times 5b in this case. यहाँ पे b 5b है, ठीक है, तो ये क्या हो गया 10b, a क्या है अपना 4b by r, c भी क्या है सॉरी 4b into r, हाँ c क्या है 4b into r. Are you feeling this guys? तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, हैव टू मल्टीप्लाई विथ r, सब्स्टिट्यूट हियर, या फिर b का वैल्यू रखो यहां पे सब्स्टिट्यूट करो. It's very ugly, right? This is very ugly. Am I right? Yes, no, not a plus c नहीं, साहिल सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म. अच्छा, इसको AP में ये x है, ये y है, ये z ऐसे assume कर लो, ठीक है, x y z ऐसे assume कर लो. So y minus x will be equal to z minus y, ऐसे बोल रहा था मैं. Understood? So 2 times y is x plus z. 2 times y क्या है 5b, 5 into 2 times b is this, and so on. Okay, so this is one of the ways, but my suggestion would be to go for reverse engineering. Okay, so reverse engineering में अपन क्या करेंगे, let's say it is 10. Yes, if middle term is 10. Okay, if the middle term is 10, so what do we want, 10 plus something should give you 70. 10 plus something should give you 70. Am I right? Yes, तो अपन क्या करेंगे, let's go trial and error for r को ट्रायल एंड एरर करेंगे. r के पॉसिबल वैल्यूज could be 1, 2, 5 and 10, है ना, it could be 1, 2, 5 and 10. 1 तो मतलब नहीं है, 1 रहेगा मतलब सेम ही टर्म्स रहेंगे, कोई मतलब नहीं है. 2 अगर हुआ, if r is 2, what will happen, 10 by 2 is 5, 10 into 2 is 20, small value, also it's ending with 5. 5 के साथ एंड करेंगे तो 2 and 50, अगेन एंडिंग विथ 2. 10 के साथ करेंगे तो 1 by और यहाँ पे 100 से ज्यादा, सो 10 विल नॉट वर्क. अपने ट्रायल एंड एरर में 10 नहीं वर्क करेगा, सो व्हाट विल वी डू, गो फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट. यस, 10 डिड नॉट वर्क आउट, नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट व्हिच इज 20. लेट्स सी इफ 20 वर्क्स आउट. सो इफ दिस इज 20, r के पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकते हैं, उसके फैक्टर्स है ना, प्रोबेबली फैक्टर्स 1, 2, 4, 5, 10 and 20. Am I right? 1 into 2, 2 into 10, 4 into 5. Yes? Are you feeling this guys? तब क्या 1 तो मतलब नहीं है, 2 अगर हुआ, 2 मतलब क्या, 20 by 2 which is 10 plus 20 into 2 which is 40. Is it equal to 70? This satisfies. Where b अपन ने क्या लिया, 20 लिया, और r को अपन ने 2 लिया. But you can't blindly go for this, है ना. तब क्या करोगे, ये इससे चेक करोगे, चेक फ्रॉम दिस, इधर पे चेक करो कि 4 टाइम्स करने पे फर्स्ट टर्म 10 है, 10 को 4 टाइम्स किया 40, मिडिल टर्म को 100, 20 into 5, और लास्ट टर्म को 40 into 4, 160. इज इट इन AP? क्या ये AP में है 40 plus 60, 100 plus 60. So it works out. That means B equal to 20, R equal to 2. सही है. क्लियर? B क्या हो गया 20. रुचिका ट्रायल एंड एरर से मैंने क्या किया, आई पुट अप ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20 फैक्टर्स. मोस्ट प्रोबेबली इट हैज टू बी इंटीजर्स, मोस्ट प्रोबेबली इंटीजर्स ही होने चाहिए, तो इसीलिए मैंने फैक्टर्स ले लिए. ठीक है रुचिका, ओके, बट यू हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल हियर. ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा बिकॉज थिंग्स कैन गो साउथ रियल क्विक. तो ऑल्टरनेटिव आपके पास क्या है, व्हाट्स द ऑल्टरनेटिव टू गो बाय इक्वेशंस, वन ऑफ द इक्वेशंस, द अदर इक्वेशन. 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स हो जाएगा.
समझ रहे हो? 2 इक्वेशंस 2 अननोन सॉल्व हो जाएगा. गेट इट? सो इफ नथिंग एल्स वर्क्स आउट तब ये 2 इक्वेशन को आप सॉल्व करके करोगे, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग प्लस ट्रायल एंड एरर काम कर रहा है. सो वील स्टिक टू दैट. डन ना? चलो, shall we move on to the next one? Here's the next question. Hi Rutvik. No issues Rutvik, आ जाओ आ जाओ. हाँ Sahil, yes, your second equation we can use it that way also, right? Because the sum is 70, so आपने combine कर लिया basically, right? What does this mean, guys? Geometric means, what do you mean by geometric mean? We know that arithmetic mean is nothing but sum of n terms by number of terms, correct? Same way, geometric mean is nothing but product of n terms to the power 1 by n. For example, geometric mean of, let's say, this series 1 into 4 into 16 into 64. Yes, अगर ये आपका geometric progression है, yes, इसका geometric mean क्या होगा? Geometric mean will be the product of this 1 into 4 into 16 into 64 raised to the power number of terms. कितने? 4 है, 1 by 4. That's nothing but the fourth root of what? 4 square plus 4 cube 4 power 6. Product 1 into 4 is 4, 16 is 4 square, this is 4 cube, so 4 power 6. Are you able to feel this, guys? Which is basically how much? Square root of 4 square, 4 power 3, square root of 4 power 3. Are you understanding this? Yes or no, guys? तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? Either this or you can write 4 as 2 square. तो ये क्या हो गया? 4 to 2 square, so 2 to the power 12 whole power 1 by 4. This is equal to 2 cube, जो कि क्या है? 8. समझ रहे? Yes, 8 is the arithmetic mean, geometric mean. So same way you can do. If the series is in geometric progression, then the geometric mean of the entire series will be equal to geometric mean of the series is equal to geometric mean of first and last term or median terms, geometric mean of median terms, कुछ भी है ना. So 8 can also be given as what? 1 into 64 का square root, which is 8, या फिर 4 into 16 का square root, which is again 8 in all cases. Geometric mean आपको आ रहा है समझ में? Are you guys able to understand what geometric mean is? ठीक है? So now what are they saying? They are saying what is the product of p geometric means, number of geometric means is p that are to be inserted between a and b. So a b इसके बीच में geometric means अपन डाल रहे हैं, number of geometric means बीच में डाल रहे हैं. इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये जो ये for example a x
y, z एंड b, है ना। a और b अपने एक्चुअल टर्म्स है, x, y, z आर द ज्योमेट्रिक टर्म्स। x, y, z शुड बी इन सच अ वे कि ये पूरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाए। x, y and z should be in such a way that they become a geometric progression. Are you able to understand this? Okay. Yeah, okay. So now they're asking what is the product of the geometric means. Let's say अगर मैं 3 assume, let's assume that there are 3 या फिर 2 assume करेंगे. Let's say there are, I am putting only 2 geometric means, x and y. So what will be the product of x into y? X can be given as what? X is nothing but a into r. x क्या है? a into r, है ना। y क्या है? b by r. b by r. तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, अल्टीमेटली हमें क्या मिला? a into b. Am I right guys? समझ रहे हैं आप लोग? Are you guys able to follow this? So if p is equal to 2, if p is equal to 2, अपन ने दो arithmetic mean, दो geometric mean डाले थे, so p is 2, then the product of the arithmetic means is what? Geometric means is what? a into b. p2 डालो, यहाँ पे ab square आएगा, which is not right. यहाँ पे ab to the power -2 आ रहा है, that is not right. ab to the power 2 by 2 is equal to ab, this is right. यहाँ पे क्या हो रहा? ab to the power 4, which is not right. So what's our answer? Option C, ab to the power p by 2. लॉजिक समझ में आया? We assumed p equal to 2. Let p equal to 2. X and y will be the means. X can be written as a into r. Y can be written as b by r. Multiply किया, आ गया. Is clear? ये वाला मैंने जो सॉल्व किया, जैसे मैंने सॉल्व किया वो आया समझ में सबको? C is the answer. Beautiful guys, very good. So now before we move on to the next set of questions, there is a 2-month plus subscription also. This is a new pack. 2 months, 7,000 rupees. If you use my code Surana Live, you will get 10% discount. That means this will cost you 6,300 rupees. है ना? This will cost you how much? 6,300 rupees. In these 2 months, what would you get? Top educators के batches जहाँ पे revision वगैरह होगा, 10 full length mock test for CAT 21, 100 hours of practice and live video analysis of all the TAT. Yes, use my code Surana Live. Okay guys, चलो, okay, we will do harmonic progression and AGP tomorrow. अपन हार्मोनिक प्रोग्रेशन और AGP कल करेंगे. Yeah, let's do some of these questions. और हाँ, we'll do some questions ना, थोड़ा सा questions करेंगे. APGP मिक्स वाले questions है, ट्राई करो. Try this out guys. ये AP
arithmetic progression है, A18 is to A11 is 3 is to 2, then what is S5 is to S10? Sum of 5 terms is to sum of 10 terms. Sum है वो, sum, not the term का ratio, sum का ratio. Abhyav says B, 6 is to 17. Others? Anyone else? अवयव का आंसर is option B, 6 is to 17. और कोई कुछ आ नहीं रहा है? चलो अपन ट्राई करेंगे. साहिल also says B. बहुत बढ़िया. साहिल is also saying B. Superb, very good. So read the question carefully. ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन पहले आराम से पढ़ेंगे. Yes. So what is happening here? We want to find out the sum of S5 first 5 terms and sum of first 10 terms, है ना? Sum ढूंढना है हमें, for which we will need the first term, we will need the common difference D, है कि नहीं guys? So what we'll do, we'll start with this. इससे चालू करते हैं कि 18th term by 11th term is equal to 3:2. 18th term can be written as what? A plus 17 times the common difference. 11th term can be written as what? A plus 10 times the common difference, है ना? This is 3/2. Cross multiply, what will you get? You will get 2A plus 34D is equal to 3A plus 30D. Yeah, if you solve this, A यहाँ पे 30 यहाँ पे, you will get 3A minus 2A, 34 minus 30D is 4D. A is equal to 4D. This is what you're getting from the first given scenario. Make sense? Yes. Now what are we going to do? We're going to use this here. Sum of first 5 terms by sum of first 10 terms. So sum of first 5 terms by sum of first 10 terms. What will be sum of first 5 terms, guys? Sum of n terms is given by n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, है ना? Yes, so we'll use this formula directly. 5 by 2 into 2a प्लस n क्या है? 5 है. 5 माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या हो जाएगा वापस? 10 बाई 2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी. सो बाई 2 कैंसल, डिवाइडेड बाई 2 कैंसल. दिस इज वंस, दिस इज 2 टाइम्स. सो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स बाई sum of first 10 terms is 2 times a plus, या ठीक है, a का वैल्यू क्या है गाइस? व्हाट इज a? 4d, है ना? a क्या है? 4d. so 2a will be 8d plus यहाँ पे 5 minus 1 4d, 8d by 4d divided by 2a is again 8d plus 2 times 2 times 8d plus 9d. ये कितना हो रहा है? 12 times d divided by ये 17 34d. yes, यहां पे क्या हो जाएगा? आपका d कैंसल हो जाएगा. d would get cancelled. this is 6 times, this is 17 times. so what are you getting? S5 is to S10 is 6 is to 17. Direct equation solving.
नो हेडेक्स, नो असम्पशन, कुछ भी नहीं है ना. वी आर नॉट डूइंग एनी असम्पशंस, एनी ट्रायल एंड एरर, लॉजिक, कुछ भी नहीं. डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्विंग, दैट्स इट. ठीक है ऋत्विक, वेरी गुड. सो वेरी गुड रुचिका, साहिल, अवयव, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल वर्क गाइस एवरीवन. ओके, then shall we move on to the next one? Are you guys ready for the next one? Here's the next question. This is also from arithmetic progression. Let's see if you all can try this. And there's a small change in the answer choices. This is supposed to be -20. Huh? चलिए ट्राई करिए जल्दी से ये वाला. The moment you get an answer भेजो, ठीक है. सही है गलत है वो अपन देखेंगे. We'll decide if it's right or wrong later. If you have an answer, send it. हुआ? नहीं हो रहा? चलो कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं, ट्राई करेंगे अपन, है ना. लेट्स स्टार्ट. A3 प्लस A7 क्या बोला है? 6 बोला है. A3 प्लस, ओके, श्रेयसी से 76. चलो ठीक है, श्रेयसी का आंसर आया है 76. और कोई? One of the best ways of doing this question, is okay, it would best be with trial and error. ठीक है, बेस्ट वे वुड बी ट्रायल एंड एरर. तो अब ये A3 इंटू A7 8 बोल रहे हैं. A3 इंटू A7 इज 8. यस, we have to get the product of these two numbers, A3 into A7. A3 और A7 का प्रोडक्ट 8 होना चाहिए, सम 6 होना चाहिए. क्या हो सकता है गाइस नंबर? What could be the number? Product should be 8, sum should be 6, है ना. 2 and 4. 2 into 4 is 8. 2 plus 4 is 6, है ना. 2 into 4 is 8. 2 plus 4 is 6. Satisfy कर रहा है? Yes. So what are we considering? We are considering A3 to be 2 and A7 to be 4. अब इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, if I subtract them, I will get 4 times D
is 2 है ना, a7 minus a3, ये इसको माइनस कर दो, कोई नहीं, will give you 2, or d is equal to 1 by 2. So you got the common difference d as what? 1 by 2. Make sense? तो अब आप फर्स्ट टर्म ढूंढ सकते हो. कैन यू फाइंड द फर्स्ट टर्म? यस, यू नो दैट a3, आपको पता है कि a3 क्या है? a plus 2d. यस, a3 आपने 2 लिया, 2 is equal to a plus 2 into 1 by 2 which is 1. तो a आपका क्या आया? 1 आया. So when a is equal to 1, d is equal to 1 by 2, sum of first 16 terms, s16 क्या हो जाएगा? S16 is n by 2 into 2 times a plus n minus 1 into d. Yes, which is what? 8 into 2 plus 15 by 2. 15 by 2 कितना? 7.5. So this is 9.5. 8 into 9, 72. 72 plus 4, 76. So sum of 16 terms क्या आ रहा? 76 आ रहा. Is this right guys? यहां पे किसी को कोई डाउट? Yes, but there is a small hiccup here. यहां पे छोटा सा एक hiccup है. हाँ, जरूरी है क्या कि a3 2 होना चाहिए और a7 4 होना चाहिए? Is it necessary? There is an alternative way also ना. और क्या हो जाएगा? 8 को मैं ऐसे भी तो स्प्लिट कर सकता हूं. a7 is 2 and a3 is 4. a7 2 है और a3 4 है. डिक्रीजिंग जीपी है ये. 4 फिर ब्ला 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 फिर 2, डिक्रीजिंग जीपी. तो यहां पे मैं क्या, व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज, इफ a3 या a3 is 4 and a7 is 2. Yes, so what will happen? 4d will become minus 2 or d will become minus 1 by 2. If d is minus 1 by 2, अगर d minus 1 by 2 है तो सबसे पहले we'll find out what a is, है ना. a क्या होगा? a3 is supposed to be a plus 2d. a3 क्या है? 4, supposed to be a plus 2 times d क्या है? minus 1 by 2. So what are you getting? This is minus 1. Yes, minus 1 इधर गया. a is equal to 5. So if a is equal to 5, then what will be the sum of first 16 terms? Sum of 16 terms क्या हो जाएगा guys? 16 by 2 into 2 times 5 plus 16 minus 1, that is 15 into d minus 1 by 2. I hope you guys are able to understand this. So sum of 16 terms is what? 8 into 10 minus 7.5, which is 8 into 2.5 minus 20 minus 2.5 no? Plus 20. Supposed to be plus 20 only, not minus 20. Why did it? Correct है, plus 20. ठीक है. Are you guys able to understand this? Yeah. So आपका आंसर 20 भी आ रहा है, 76 भी आ रहा है. There are two possible answers. It is possible that the answer could be 20, answer could also be 76. Yes, under such circumstance what will happen? Under such circumstance, because A is also satisfying, B is also satisfying, there can't be two right answers, है ना. There can't be two right answers. That basically means that the data is inadequate. Data is inadequate. उन्हें दे देना चाहिए कि D क्या होगा. If D is greater than 0, then the answer is 76. If D is less than 0, then the answer is 20. ठीक है? Understood everyone?
अच्छा लगा ये वाला क्वेश्चन? वाज इट इंटरेस्टिंग? तो जिन्होंने भी ए बोला क्लियर है ना? पीपल हु सेड ए, श्रेयसी, साहिल, अवयव, रुचिका, सबका क्लियर है? चलो ब्यूटीफुल, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. ट्राई करो ये वाला. बैड क्वेश्चन नहीं यार, अच्छा क्वेश्चन था. इट वॉज अ गुड क्वेश्चन इन माई पर्सपेक्टिव. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन था. आप ट्रैप में गिर गए तो आपको बुरा लगा. चलो ट्राई करो ये वाला. We just have to find k, that's it. Simple question है ये, this is not complex at all. We simply have to find what is k. Nitin is saying A 40. Okay, is this for this question? ये वाला question का है क्या ये? Nitin says A 40. Others? Anybody? नहीं? Okay, Rutvik says C. Rutvik says C 54. ठीक है. और कोई? Okay. रुचिका is saying D, यश is saying C, श्रेयस is saying A. चलो देखेंगे, फटाफट ट्राई करेंगे ये वाला. एक there are two ways of doing this. एक equations रख के, एक थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर रख के. ठीक है, तो पहले मैं इक्वेशन से बता देता हूं. I'll tell you with equations, then I'll tell you with trial and error. Okay, सबसे पहले equations करते हैं. So what's going on here? We're looking at sum of some number of terms. We don't know n हमें नहीं पता. We don't know n. We know that the common difference between them is what? 4 minus 1, 3. We know that the first term is 1 and we know that the last term is k. Yes, हमें पता है कि last term क्या है? k है, but we can't use that directly here. So what would we do here? Sum of first n terms is given as n by 2 into 2 times a plus n minus 1 into d, right? We're going to solve this. Sum of n terms is 287. This is equal to n by 2 into 2 times a is 2 times 1. N minus 1 we don't know, d is 3, right? So we get 3n minus 3. Take this 2 to the other side. 287 का डबल कितना हो जाएगा? 574. Am I right? 400 plus 174. Yeah, this is equal to n into
3n minus 1. So what do you get? 574 is equal to 3n square minus n, or you get a quadratic equation 3n square minus n minus 574 is equal to 0. Am I right, guys? Does this feel right? Now what do we have to do? We have to solve this, right? We're gonna have to solve this. So 3 into 574, 3 into minus 574 is how much? Minus 1722. Yes, 3 into 5 is 1500. 3 into 500 is 1500. 3 into 70 is 210, which is 1710 and 12. Okay, this needs to be split where the sum where these should be two consecutive terms. So consecutive क्या है? 41 and 42. Negative चाहिए तो minus 42. Yeah, minus 41 plus 42. So what are you getting? N is either equal to minus 41 by 3, which definitely doesn't make sense क्योंकि number of terms negative नहीं हो सकता, तो n has to be 42 by 3, which is what? 14. Is that clear, guys? आ रहा समझ में ये? I hope you guys are able to feel this, हाँ? तो हमें n मिल गया 14. If n is equal to 14, all we have to do is what? Find out k. k क्या है? nth term basically, right? नहीं समझा रुचिका? I didn't understand what you just sent. ठीक है, so k, that is nothing but your 14th term is given as first term plus 13 times d, which is what? First term अपना 1, d अपना 3 है, so 13 into 3, 39 plus 1, 40. Got it? सब हाँ बोलो अगर ये आया समझ में, if you understood this. Yeah, तो जिन्होंने भी 40 बोला, A 40 बोला, that's the right answer. Shreyashi, very good. I am assuming नितिन आपने A इस क्वेश्चन के लिए बोला फिर चेंज कर दिया था क्या? ठीक है, चलो, beautiful. A 40 is right. Alternatively by trial and error. ठीक है, ध्यान से देखो, ये trial and error से कर रहे हैं अपन. We know that the sum of n terms, right? Sum of n terms is basically equal to what? Arithmetic mean into the number of terms. हाँ या ना? Sum of n terms, क्योंकि ये AP में अपन देख रहे हैं ना, +3 +3 +3 +3, ये AP में. Because it's in AP, we can say sum of n terms is arithmetic mean into n. Yes. So can we say 287 should be arithmetic mean क्या? 1 plus k first term plus last term by 2 into n. हाँ या ना guys? 1 plus k by 2 है ना? First term plus last term by 2 into n. तो 2 को उस तरफ लेके चले जाएंगे, क्या मिलेगा हमें? We will get 1 plus k into n is equal to 574. Is that clear? 574. Yes. Now what we have to keep in mind here, what we have to start trying and checking is n के possible values. Yeah, k is integer. k आपका integer रहेगा क्योंकि +3 +3 +3, k is integer. That means 1 plus k is also integer and number of terms has to be an integer. ठीक है, सारे integers है, 1 plus k भी integer है, n भी integer है, right? So 574 को if you split, yes, if you split 574
This can be written as 1 into 574, which is not possible. Not दोनों possible नहीं है, n का वैल्यू भी नहीं हो सकता, 1 plus k का वैल्यू भी नहीं हो सकता, right? Next will be what? 574 by 2 करोगे, 287 and 2. दोनों again k नहीं हो सकता, n नहीं हो सकता, so this is also out. Yes, this is out, this is out. ऐसे करके if you go for you want integers, तो 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा. 7 into 82. Yes, 7 into 82, right? So 7 into 82 is 574. 7 terms, 7 terms. Do they add up to 287? नहीं, काफी छोटा है ना? And will the 7th term be 82? That is the check we have to do. क्या 7th term अपना 82 आएगा? Is A7 equal to 82? Yes or no? Check करो. 7th term मतलब क्या? A plus 6 times D. A अपना 1 है, 6 times D is 18. This is 19. तो 82 नहीं आ रहा है. Are you feeling this, guys? 82 नहीं आ रहा है. So what will be our next target? Our next target will be what? 574 को अगर आप 14 से डिवाइड करोगे, 14 into 41. Let's check if this is correct. Yes, is the 14th term is A14 equal to 41? Yes or no? Yeah, how do we do this? A plus 13D है ना, a plus 13d. Am I right? नहीं, रुको, 1 plus k, this is 1 plus k, so it should be 40 minus 1, 40. Does it make sense? Yes, it does, है ना? कैसे? 1 plus 39 is 40. So k is equal to 40, k plus 1 is 41. Are you feeling this? ठीक है, तो ये 82 नहीं होगा, this will become 81. Checking for 81, either which ways that's wrong. Say yes if you understood this trial and error वाला logic. Trial and error वाला logic आया क्या समझ में? So what do you get? You get that the number of terms n is 14 and you get 1 plus k is 41 directly. तो अब आपको ये इक्वेशन सब करने की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, ये सब कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको k का वैल्यू आ जाएगा. अगर 1 plus k 41 है तो k क्या है? 40. एंड ऑफ स्टोरी, है ना? समझ गए? आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म करेंगे क्या? विल डू वन लास्ट क्वेश्चन एंड एंड इट. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन. Last question. Do this. क्या करेंगे? Shall we do more questions? करेंगे क्या? और if you are comfortable with that, we can do more questions. क्योंकि आगे अभी और कोई क्लासेस I don't think are scheduled, है ना? चलो करते. Go ahead guys, try this. All right रुचिका, thank you. मेरा नंबर नितिन नंबर तो नहीं है. You can contact me on Telegram. सुराना लाइव कैट करके अपना ग्रुप है. You can join this Telegram group. Official group है. Join this official Telegram group and then you can drop a message there. ठीक है? मजा आ रहा है? चलो ठीक है. आओ भाई कृष्णा. दिमाग स्लो हो गया. थोड़ा सा पुश करेंगे ना साहिल, थोड़ा सा पुश करेंगे, हल्का सा पुश करेंगे. स्लो हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब धीरे चल रहा है दिमाग, कोई प्रॉब्लम नहीं. अपन को स्पीड से कुछ लेना देना नहीं है, एटलीस्ट फॉर नाउ. आओ आओ समर्थ.
फाइनली मैंने सोचा समर्थ ने देखा कि लास्ट क्वेश्चन बोला था तो उसलिए आ गए, बट ये लास्ट नहीं, अभी करेंगे और थोड़ा, ठीक है। आ जाओ। ट्राई करो, ये टीटा क्वेश्चन है, दिस इज अ टीटा क्वेश्चन, देयर आर नो आंसर चॉइसेस हियर, सो यू हैव टू बी सुपर केयरफुल, ओके। एनीवन? अगर आंसर चॉइसेस होते, इफ वी हैड आंसर चॉइसेस, तब अपन आसानी से कर पाते हैं ना। आंसर चॉइसेस अगर होता तो आसानी से हो जाता, बट आंसर चॉइसेस नहीं है। डिक्टेट करूं? ठीक है साहिल, ओके, आई विल डिक्टेट द क्वेश्चन। ABC is a 3-digit number. This is not A into B into C, हाँ, A into B into C नहीं, ये नहीं। ABC, these are 3 digits. ABC is a 3-digit positive integer where A, B and C are in arithmetic progression. And they are saying that the sum of A plus B plus C is equal to 15. If 594 is reduced from this number, ABC से अगर मैं 594 reduce कर दूं, तो I get the reverse of it. So the digits reverse themselves. C, B, A हो जाता है। They're asking what is the number. ABC क्या है पूछ रहे हैं, ठीक है। ओके साहिल, अरे वाह समर्थ, इतना बड़ा दिल भाई, ओहो इतना बड़ा दिल, आज क्या हो गया? आज समर्थ अच्छे मूड में लग रहा। टुडे समर्थ सीम्स टू बी इन रियल गुड मूड। चलो गाइस, करो जल्दी से ये वाला। मेक सेंस ऋत्विक, मेक सेंस। ओके अवयव, वेरी गुड। अवयव says the answer is 852. ओके ब्यूटीफुल अवयव, वेरी गुड, very good Shreyashi, 852 is the right answer. Superb, superb, beautiful. Okay, so what are we going to do here? See, any 3-digit number of the form A, अगर आपका first digit A है, second digit B है, third digit C है, so C is the ones place, B is the tens place and A is the hundreds place, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, if I want to write down the number, पूरा नंबर को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, just for an example, अगर मेरे को 456 को can I write it as 4 into 100 plus 5 into 10 plus 6 into 1, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं? Can I write it like this guys? So ये क्या हो गया, 100A प्लस 10 टाइम्स B प्लस 1 टाइम्स C, कोई एक नंबर है, ठीक है। एंड व्हाट आर दे सेइंग, द अदर नंबर, इसको रिवर्स करने पे CBA मतलब क्या हो जाएगा, 100C 10B एंड 1A। इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन देम इज व्हाट, 594, है ना। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 594। डज दिस मेक सेंस टू यू गाइस? यहां तक क्लियर है क्या आप लोगों को? यस। नाउ इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस, मेरे को क्या आना चाहिए, 594, है ना।
So let's subtract it. 100A minus A, 99A. 10B minus B, cancel, 0. C minus 100C is minus 99C. So 99A minus 99C is 594. 99 को common लिया. A minus C is 594 by 99, which is 6. This is one part which will help us answer this question. What's the other part? ये AP में, these are in AP and the sum is 15. Yes, A plus B plus C क्या है? 15 है. और ये AP में मतलब क्या कि B minus A should be equal to C minus B, और in other words 2B should be equal to A plus C, है ना? Because they are in AP, दोनों के बीच के differences same रहेंगे. So 2B is A plus C. A और C के बदले में अगर 2B डाल दो तो क्या हो जाएगा? 2B plus B is 3B is 15. B is equal to 5. So what are we getting here? Out of the three numbers, 1, 2, 3, out of the three numbers, middle term is 5. Middle term is 5 and the difference between this and this term is 6. So if this term is 1, this will be 7. Yes, 751. Or if this term is 2, this will be 8. 852. Or 953, so on. Yes, what do we have to check? We simply have to check if they are in AP or not. Yes, क्या ये AP में है या नहीं है, ये check करना है. 7 and 5 minus 2, here minus 4. AP में है? नहीं. 9 minus 5 is 4. यहाँ पे क्या हो रहा है? 2. AP में है? नहीं. Only term in AP is 852. Yes, the only term in arithmetic progression is 852. 8 minus 5, 3. 5 minus 3 is again 2. So our answer is 852. Is that okay, guys? सबका clear है ये? Hi Yash. Yash, for CAT 2022, buddy. For CAT 2022, I will soon be starting a new batch. Okay, new batch I will be starting on YouTube. I will give you the update. I'll give you an update on this. Yes, it's planned to start in the second week of October. Second week. Yes. So we'll plan accordingly, and I'll let you know when we are starting a new batch. You can drop me a message on Telegram, send me a message on Telegram, and I'll help you out there. Okay, Telegram पे message करो, group का link in the description, use that. Okay. चलो next question guys, quickly try this. बहुत ही simple question. This is also a theta question. ये भी theta question है. Please be careful. क्या हुआ समर्थ? समर्थ नहीं समझ में आया क्या मैसेज रिप्लाई? ये तो सिर्फ करेंसी है ना,
ये तो करेंसी है, कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, ये वाला तो सिर्फ करेंसी है ना, रुपीज डॉलर्स डजंट मैटर समझ रहे, डॉलर्स हो या रुपीज हो इट डजंट मैटर, इट्स ऑल द सेम फॉर अस। अपने को ऐसा नहीं है कि पैसा दे रहे ये लोग, है ना, अपने को तो पैसा दे नहीं रहे, अपन को तो सिर्फ उल्लू बना रहे क्वेश्चन देके तो यूनिट कुछ भी हो, कोई भी यूनिट हो, बिटकॉइन भी दे दे, इनका भरोसा कुछ नहीं है इनका कोई भरोसा नहीं है, बिटकॉइन दे दे, ठीक है। ऑलराइट, आंसर्स गाइस, क्या पढ़ूं यार, ऊपर आपने स्माइली भेजा, फिर उसके ऊपर भी स्माइली भेजा, फिर उसके ऊपर बोला आज एक्स्ट्रा टाइम ले लो क्योंकि आज आपने सुबह क्लास नहीं ली, इसके बाद तो कुछ आया नहीं। Okay, Avyav is saying 20. Avyav says the answer is 20 others. So consider it this way. Consider it this way that in the first month he deposits $20. In the second month, what does he do? He increases the deposit by $15. So in the second month he adds $15 extra, making it 35. In the third month another $15, which is 50, and so on. They're asking in how many months will 3,250 be deposited. So the total deposit, overall deposit should be how much? 3,250. Does this make sense guys? तो यहाँ पे क्या हो रहा, our first term is 20, common difference is 15, we don't know n, this is what we have to find out, n is what we need to find out, but we have been given that the sum of n terms is 3,250. Yes, directly put this in the equation, 3,250 is nothing but n by 2 into 2 times a, 2 times a is 40 plus n minus 1, we don't know what n minus 1 is, but d is 15. Yes, so take the 2 to the other side, you would get 6,500 is equal to n times 40 plus 15n minus 15. So what are you getting? You're getting 6,500 is equal to 40 minus 15 is 25, so 25n plus 15n square. Cool. So what we can do before we move ahead, we can divide this equation by 5. Let's divide this equation by 5. What would we get? 6,500 by 5 is basically 1,300. 1,300 is 5n plus 3n square. So you're getting a quadratic equation, 3n square plus 5n minus 1,300 is equal to 0. Say yes if this is clear guys. This is your quadratic equation. Because there are no answer choices, क्योंकि यहाँ पे कोई answer choices नहीं है, reverse engineering is not even an option, है ना? Reverse engineering is not even an option. We will have to do it manually. कोई दूसरा तरीका नहीं है. तो minus 1,300 into 3, which is minus 3,900. The sum should be 5, right? Sum क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए. तो ये क्या हो जाएगा? This is 65 into 60. 65 into 60, 3,900. Because we want sum to be क्या बोलते हैं, positive. Here it is. तो n का वैल्यू क्या होगा? Either it will be minus 65 by 3, which is not possible. Number of terms. n क्या है? Number of terms. Number of terms cannot be negative or in fraction. Number of terms must always be a positive integer. So ultimately the only choice left for us to consider would be what? That the number of terms will be 60 by 3, which is 20. Is that clear?
So there will be how many? 20 terms in this particular arithmetic progression. That is, if he keeps depositing starting with $20, increasing 15 till the end, what will happen? You will get, in 20 months you will get $3,250 be deposited. ठीक है? Got it? साहिल, वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा. साहिल, आप जितना जितना जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे you will get it. See 3900 मैंने क्या किया? 3900 I wrote it as 13 into 13 3 times, so 13 into 300. 3900 को मैंने 13 into 300 लिखा. फिर now what I'm doing is I'm sending some value here. यहाँ पे यहाँ से यहाँ कर रहा हूँ, such that the difference between them is 5. Such that difference between them becomes 5. समझ रहे? Yes, तो difference 5 करना है मतलब वैल्यू को close enough लेके आना है, पास में लेके आना है. एक 0 लेके गया तो 130 और 30 बहुत ज्यादा दूर हो गया. Yes, so I took a 5. यहाँ से 5 निकाल के इसको दिया. 13 into 5 is 65. 300 by 5 is 60. दोनों में कितने का डिफरेंस? 5 का डिफरेंस. ओके, दिस इज द मोर यू प्रैक्टिस. आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये फैक्टराइज करना, ऑल दिस विल बिकम वेरी हैंडी टू यू. ठीक है? मैंने डायरेक्ट n का वैल्यू लगा दिया यहाँ पे. ऋत्विक, डायरेक्ट n का वैल्यू लगा दिया. द सम शुड बी माइनस ऑफ प्लस 5. सम ऑफ n, सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n शुड बी माइनस ऑफ प्लस 5. ठीक है? आई होप दैट्स क्लियर. प्लस 5n मतलब क्या? इनका सम शुड बी माइनस 5 ऐसे. ठीक है? ओके क्या? मैंने ये डायरेक्ट n के वैल्यूज ही ले लिए. डायरेक्ट n के वैल्यूज. आई एम नॉट फाइंडिंग आउट इसको कैसे लिखेंगे. सो यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज व्हाट? n into n plus 65 by 3 into n minus 60 by 3. दिस इज द इक्वेशन. मैं ये इक्वेशन लिख के फिर 0 लगा के नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली कर रहा हूं इसलिए. ओके, डन गाइस. तो चलो यहां पे अपन रैप करेंगे. वी विल मीट अगेन टुमारो. टुमारो वी विल बी डूइंग व्हाट? टुमारो अपन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. टुमारो वी विल डू हार्मोनिक प्रोग्रेशन and arithmetic geometric progression, AGP. okay, ठीक है? Also guys, there are a lot of new batches that have started, a lot of new plans for CAT 21, 22 and 23. You can take benefit of them, take advantage of them by taking the subscription. You can take 6 months, 18 months, 24 months. If you're preparing for not just CAT but for other management entrance test also. If you're preparing only for CAT, then you can take the 2-month subscription, which is 7,000 rupees exclusive of the discount. So इस पे discount मिलेगा 10%. So it will cost you 6,300. Don't forget to use what code? What's my code guys? Surana live. Okay, ठीक है ना? एंड दिस इज फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इफ यू आर लुकिंग फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, बट अलॉन्ग विद दैट आपको 1-on-1 लाइव सेशंस मिलेंगे विथ योर मेंटर्स. इन दीज 1-on-1 लाइव सेशंस यू कैन आस्क डाउट्स with respect to questions, concepts, with respect to your college application, how you should do your preparation, कैसे क्या करना है. Any doubts you have, your mentors will help you with that, right? So you can take Iconic subscription by choosing any one of these subscription packages and using my code Surana Live for 10% discount. Okay. All right, guys. Thank you so much. Today 8 p.m. we are doing the session. Today 8 p.m.
Today 8 p.m. we are starting with mixtures and alligations. Okay, backbenchers practice arena. I hope you guys remember that. काफी time हो गया. This is on the Unacademy's learning app. Download the app. If it is asking for a code, use my code Surana Live. Join me at 8 p.m. today. I will be sharing the link on Telegram. Okay. App pe Sahil, app pe. Yeah. Chalo guys. Alright then. Thank you so much for being a part of the session. I'll see you all at 8 p.m. today. Until then, keep learning and let's crack.